stored in loops. ठीक है. These mRNA, when required, form lot of proteins. एग्जाम्पल है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, LBC, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम. ये मैंने ही बनाई है, ये कहीं लिख के नहीं आनी है आपने ये एब्रीविएशन. लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स में पूरा लिखना है. आर फाउंड इन oocytes. मैडम अगले महीने अक्टूबर में कोई छुट्टी हो रही है इंस्टीट्यूट में? हाँ, कोई छुट्टी नहीं है. कोई छुट्टी नहीं है, दिवाली से पहले कोई छुट्टी नहीं है. एक्स्ट्रा ही क्लासेस लगेंगी, संडे भी लग सकती है. सब पूछ रहे हैं. अतरी सर पूछ रहे हैं, कहना सर आपकी एक्स्ट्रा है, दिवाली पे भी आपकी छुट्टी नहीं. LBC are found in oocytes where large amount of yolk is required. Where large amount of yolk में क्या बहुत सारे प्रोटीन्स है, they are protein rich. तो इसलिए वहां पे क्या मिलता है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स. ठीक है. और याद क्या रखना है, ये नहीं कि oocytes में मियोसिस हो जाएगी तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, नहीं. लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन permanently diplotin stage of meiosis. परमानेंटली डिप्लोटिन मतलब ये अलग नहीं होते हैं, बाकी सारा सेल मेयोसिस कंप्लीट कर लेगा बट ये एक सेल में इकट्ठे रहेंगे. दिस इज अबाउट लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स. ठीक है बेटा, कर दूं अब ये मैं? तो अब हमने क्या किया था, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम्स है, और लास्ट हमारा क्या पार्ट रह गया है, न्यूक्लियोलस. oocytes जहाँ पे बहुत सारा योग हो, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, जहाँ पे योग सिंथेसिस है. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस it is the riboproteinaceous structure present in all eukaryotic cells. Riboproteinaceous structures present in all eukaryotic cells. Number ranges from 1 to many. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, but mainly 1%. Formed by nucleolar organizing regions of
sat chromosomes formed by nucleolar organizing regions of sat chromosomes. First observed by Bowman's, but term nucleolus coined by Fontana. Not enclosed by any membrane, not enclosed by any membrane. Components of nucleolus. इधर बेटा बातें बाद में मेरे से पूछ लो जो पूछना। ये पेरिफ्री पे क्या है? दिस इज क्रोमेटिन पार्ट, न्यूक्लियोलर डीएनए। This is nucleolar chromatin part. Then there is this is granular part which represents ribosomes, This is fibrillar part which is the precursor. या fibrillar part is rRNA which later form ribosomes. न्यूक्लियर क्रोमेटिन पार्ट ये क्या है? फॉर्म्स या हम कहेंगे ट्रांसक्राइब्स to form rRNA. Then this is amorphous matrix. Matrix तो चाहिए ग्राउंड सब्सटेंस. amorphous matrix ground substance है. It has various biomolecules which helps in ribosome synthesis. This is the
component of nucleolus. क्या फोन जा रहा है? फिब्रिल पार्ट। बन गया बच्चों? इधर आ जाओ, इधर फंक्शन लिखो। इट फॉर्म्स RNA, ये बताया पता है आपको, विच कंबाइन्स विद प्रोटीन्स कमिंग इन द न्यूक्लियोलस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स एंड दस फॉर्म्स राइबोसोमल सब यूनिट्स। मतलब RNA कंबाइन्स विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोमल सब यूनिट्स। 30S, 50S या 60S, 40S जो भी है वो कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, लिख लो। हो गया जी। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप किसी भी क्रोमोसोम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रोमोसोम। तो अगर हम पूरे जीनोम को, हमारे जितने 23 पेयर्स है, उसको हम अरेंज कर दें बेस्ड ऑन देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप। और अगर उसकी मेटाफेसिक क्रोमोसोम की पिक्चर में, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करते हैं, इट इज कॉल्ड एज इडियोग्राम। ठीक है, तो पहले आ जाइए कैरियोटाइप। कैरियोटाइप वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉन बाय लेविट्स्की। It was first drawn by Levitsky. Karyotype is the graphical representation. Karyotype is the graphical representation of the chromosomes of the genome of the genome
whereas pictorial representation of the chromosomes of a genome is called as ideogram. ठीक है जी. Chromosome study is done by chromosome bending technique, which was first done by Casperson et al. In which chromosomes et al. का मतलब होता है co-workers, in which chromosomes are treated with various chemicals and then stained with various dyes that gives color to the specific regions of the chromosomes. Types of chromosome bending in animal cells. Types of chromosome bending in animal cells are, कौन सी है? It is C bending, Q bending, G bending and R bending. C bending stains the chromosome in the region of constitutive heterochromatin. ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है. बताया था कि नहीं पिछली बार? जो हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन ही रहता है. इसका मतलब इस बेंडिंग से हम वाई क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हैं. क्यू बेंडिंग रिलेट्स विद द डाई क्विनाक्राइन मस्टर्ड. इसमें कौन सी डाई यूज करते हैं? क्विनाक्राइन मस्टर्ड. इस कारण इसका नाम क्या है? क्यू बेंडिंग. और इसमें हम क्या करते हैं? यह कौन सा रीजन? इट स्टेन्स AT रिच रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर हम इससे स्टेन करते हैं तो जहां पे भी एडेनिन थायमिन बेस पेयर्स है तो वो स्टेन हो जाते हैं.
Next is G bending. G bending is Gimsa bending. GIEMSA, जिम्सा बेंडिंग। ये मैं बताऊंगी जिम्सा बेंडिंग क्या होती है। इट स्टेन्स द, जिम्सा बेंडिंग किसको स्टेन कर रही है? इट स्टेन्स द सल्फर रिच प्रोटीन रीजन एसोसिएटेड विद डीएनए। आपको पता है क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स में कुछ सल्फर रिच अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जहां पे वो सल्फर रिच अमीनो एसिड्स है तो वहां पे ये स्टेनिंग कर देगा। और आर बेंडिंग का मतलब है रिवर्स ऑफ जिम्सा। कोई पर्पल कलर की है, कोई येलो कलर की है, कोई रेड है। रिवर्स ऑफ जिम्सा, इट stains the region which are not, yes, which lacks सारा संभाल दिया सामान। which lacks sulfur rich proteins, which lack sulfur rich proteins। ठीक है जी बच्चों, लिख लिया? लिखो फटाफट से। पर्टिकुलरली कलर लिखा, कलर देख कर नहीं मैं बता सकती, क्योंकि कई तरह के स्टेन्स है, कई तरह के ट्रीटमेंट्स है, कई कलर्स आते हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक, है ना। और हो सकता है कि भी इसका भी रेड हो, इसका भी रेड हो, बट वो हमें पता होना चाहिए भी ये इससे स्टेन किया है तो यहाँ पे रेड कलर आ रहा है तो यहाँ पे ये रीजन होगा। ठीक है, ये हम ये नहीं एक क्रोमोसोम को चारों से स्टेन कर देंगे, नहीं, एक टाइम पे एक ही स्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी। सी बेंडिंग में लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ स्टेनिंग द क्रोमोसोम्स आर फर्स्ट ट्रीटेड विद, strong alkali, full stop करके। then the DNA is denatured with, triasodium citrate, full stop करके। it is then stained with Gimsa stain, it helps in staining the, next point करके C bending में, it helps in staining the region around centromere, and the Y chromosomes, Q bending में लिख लो, in this type of bending the chromosomes are stained with quinacrine mustard and then observed under fluorescent microscope, क्विनाक्राइन मस्टर्ड क्योंकि एक फ्लोरेसेंट स्टेन है। थर्ड है, अच्छा क्यू बेंडिंग लिख लो, दिस इज द बेंडिंग विच वॉज स्टडीड बाय कैस्पर्सन, दिस इज द बेंडिंग, इसमें लिखना है क्यू बेंडिंग में, दिस इज द बेंडिंग विच वॉज फर्स्ट डन बाय कैस्पर्सन।
नेक्स्ट है जी बेंडिंग। जी बेंडिंग में chromosomes are first incubated. Chromosomes are first incubated in saline solution. Saline solution, and then stained with Giemsa. And then stained with Giemsa. GIEMSA. क्यों में नहीं? G में. First incubated with saline. Saline solution and then stained with Giemsa. और R bending में incubated with buffer solution, chromosomes incubated with buffer solution and then stained with Giemsa. And then incubated with chromosomes first incubated with buffer solution and then stained with Giemsa. लिखो मैं आई This was first. ऐसे ड्रम मत कर, यहाँ टाइम मत वेस्ट कर। घंटा लगेगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए ट्रेंड्स इन कैरियोटाइप। ये आपके +1 के सिलेबस में तो नहीं है, बट ये पीएमटी के उससे है। ट्रेंड्स इन कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन decreasing order of their size. Chromosomes are arranged in decreasing order of their size. Second point लिखिए, chromosomes नहीं, पहले लिखिए chromosomes काट दो। Metacentric chromosomes are placed first. Metacentric chromosomes are placed first. Then submetacentric, then acrocentric, and finally telocentric chromosomes. And finally telocentric chromosomes. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, सेक्स क्रोमोसोम्स। Sex chromosomes are placed in the last. Irrespective of